Okay, so hello guys, welcome back to another video. So तो ये वीडियो कोई मतलब मैं तो खेलने वाला नहीं हूँ, पर कल मैंने देखा कि RYZEN पे एक नई वीडियो आई है जिधर पे गॉड ऑफ रैग्नारॉक का कंपैरिजन हो रहा है PS5 वर्सेस PS4 Pro वर्सेस अपना स्टैंडर्ड PS4 फैट. So let's see how is the performance of these three consoles and let's compare the PS4 graphics with PS5. So let's see. Oh bhai. Cross-generation remains in Ragnarok, but is this going to be a winter of discontent? Wait. PS4 Pro. PS4 Pro will have 60 FPS for Ragnarok? Eh? Both are similar, but why there are two different FPS meters? Let's see. ऐसा क्यों है भाई? ऐसा दिल मत तोड़ो एक मिनट के लिए. With this second serving of the daddy simulator upon us, we have a new generation. लगता है नए मैकेनिज्म आने वाले हैं. PlayStation 5 is significantly more powerful than the PS4. Sure यार. And the modes and outputs here reflect that. As right from आप देख सकते हो डिफरेंस लाइटिंग में, ग्राफिक्स में. PS5 का थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब, कलरिंग, रिफ्लेक्शंस, मॉडल्स एकदम सही दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू PS4. यार भाई मज़े तो आने वाले हैं. You are asked what mode you want to do this at. From the highest quality to the latest 120 FPS frame rates, you have some big choices to make. 120 FPS. There are some big leaps over last generation. नहीं 120 FPS तो नहीं होगा. Two core modes: favor resolution and favor performance. अच्छा. Toggle in terms of high frame rate mode, which wait मैं थोड़ा वॉइस बढ़ा देता हूँ. इधर से आवाज कम कर देता हूँ हेडफोन से. ओके भाई इन्होंने मतलब ऑप्टिमाइज तो खतरनाक वाला किया है. ओ भाई फेवर परफॉर्मेंस, फेवर रिजोल्यूशन, क्लियरली यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस हियर. हम ठीक से दिख रहा है भाई पूरा. With some caveats give or take, and now targets a dynamic 4K but at 60 FPS as a ceiling. But by turning on that high frame rate mode with a 120Hz screen, the resolution mode now dynamically PS5 का ही दिखा रहा है. Let's see for PS4. FPS, and that ये रहा PS4. ये PS4 का है भाई. Each platform is utilized stands out. I'm sure even Kratos himself is impressed, right? No. It's always a difficult man to please anyway. Let's start with the PlayStation 5 and its performance using that 120 FPS 4K quality mode. In the first few hours, 120 FPS कैसे दे सकता है भाई? इतना पावरफुल कब से बन गया? If you have a 60Hz screen, हाँ पावरफुल तो है, पर फिर भी high frame rate mode in the menu. It can have a couple of dips into the high 30s and heavier action, and even on occasion just skips into the next. भाई क्या ही हाइप हो गई, और इन्होंने क्या हाइप क्रिएट करके रखी है. गेम लीक हो गए फिर भी इतने हाइप है इस गेम की. The game also supports VRR, and if you do have a VRR because screen, it's God of War after all, FPS with those small spikes up and down being managed by the VRR display. I noted no issues in this mode, so if you do wish to have the best visual package and performance, this is the mode to choose. Okay. For those that don't know and want the highest frame rates, then you can go for that 120 FPS mode, which basically is the performance mode with the cap removed. This means you often fluctuate somewhere between 80 to 90 FPS in action. It feels very responsive. It feels PS5 तो बादशाह है भाई, कुछ भी बोलो देखो ना. FPS 82 performance and high FPS. Okay. And if you are after the fastest, most responsive ये इतना रेंडर क्यों हो रहा है? version of the title, then this is definitely the one to choose. It can hit 120 FPS in very quiet sections, but generally
it's somewhere around that 80 to 90 FPS, Okay. putting it perfectly in the यार ballpark क्वालिटी of बहुत almost गंदी लग रही doubling है the भाई. performance, give or take, over that quality mode. Okay, let's see now. भाई क्या PlayStation 4 comes in with a pretty much locked 30 FPS. A couple of dips here and there, single frame jitters from cinematics, powerful नहीं भाई, 9 साल पुराना Sony Santa Monica hardware have use कर रहे हो delivered a तुम और fitting swung song to the क्या PS4 expect with करोगे no performance issues to concern yourself with. And this brings us to the final console in the Pro. Using that 1656 DRS solution at 30 FPS, the performance is as good as rock solid as the PS4, and there's certainly no issues here. It even has a better IQ than the checkerboard solution of the previous title. But the 60 FPS mode certainly has some judder, averaging somewhere between 60 45 FPS to भाई below बहुत ही 50s फ्रेम at ड्रॉप हो best, रहा है. means इससे it अच्छा can 30 feel पे very कैप पे ही close खेलो. to the same kind of performance as previous titles on the PS3 such as God of War 3 or Ascension. अच्छा. It's certainly more responsive and faster than a 30 FPS lock. Do not expect a locked 60 FPS most of the time, and in heavy combat cinematics and certainly some of the denser worlds you can get quite a bit of camera judder as it skips into the next refresh. क्या गेम बनाया भाई. Dynamic resolution scaling along with that TAA certainly helps the image quality, but it can often be 1080p, but performance is good if भाई not PS4 great. ने भी दिल जीत लिया भाई. देखो भाई कितना हार्डवेयर इसका पावरफुल है. अभी भी इस गेम को मतलब ये गेम उस पर आ गया. मतलब डेवलपर्स को भी हैट्स ऑफ भाई कि उन्होंने ऑप्टिमाइज कर लिया PS4 के लिए. मुझे तो लगा था कि नहीं आएगा. अनरियल इंजन 4 ही होगा ये, 5 तो नहीं हो सकता. The core assets, the character models, materials, exceptional particle and visual अभी effects, पता चलेगा. animation are all close to identical no matter which platform you continue your journey on. अच्छा. And from that perspective, the fact the base PS4 मतलब अलग-अलग है is a शायद hardware over PS4 और 10 years PS5 old के now from a एनिमेशंस. technological build perspective still offers such incredible visual and performance Yes levels. भाई, is देखो more than भाई, worthy of PS4 applause. Even more पुराना impressive वाला. is the fact the team have improved many areas हाँ, over the कसम original भाई. 2018 release. PS4 steal big the show bro. कुछ भी बोलो. Area of the game's exhaustive special effects is its heavy reliance on GPU भाई ये लैग क्यों हो रहा है. accelerated particles. From dead bodies decaying away that you use an alpha blended test that collide with particles to allow each body to dynamically and dramatically decay. This is increased in Ragnarok. मजे आएंगे भाई PS4 पे खेलने में भी. अपने पास तो PS4 ही है, क्या कर सकते हैं. ओ भाई ये क्या है. The FX suite the team has access to and अरे रे रे क्या मार रहा है भाई. provide one of the game's Oh, core भाई. visual identity pillars, and the central single-shot camera system ensures you are always front and center of each blow, and it's always. By the way, IGN इस पे कॉपीराइट मत देना भाई. वॉर फाइट भी है क्या इसमें अपने. Being a story of शायद gods and शैडो ऑफ monsters, टॉम रेडर Kratos is सॉरी a hawking राइज ऑफ टॉम रेडर में anti-hero भी with एक his वॉर फाइट थी आई गेस स्टार्टिंग में ही. हाँ थी उसको मारने में चक्के Again, छूट the गए थे team मेरे. managed that here with this अरे थॉर भाई statue अरे being यार used and abused ना लैग based मार on the रहा है story ये. and animation phase. The unique single camera shots लैग क्यों मार रहा है भाई. नेट तो system returns and always keeps Okay. you in the game, as all gameplay to cinematics are seamless back and भाई forth. भाई ये क्या It बनाया है इन लोगों ने. dynamically in the midst of battle, हाँ, or even कसम. you simply make your way through the world. PBR materials are hyper-realistic हाय again, with हाय. strong diffuse-based colours mixed with a pro-based lighting system, merged with भाई vague elements due to साहब the पैसे game's ले लो fixed मेरे को lighting दे दो ये model. गेम This जल्दी helps aid the जल्दी team's से दे design दो. focus and the performance levels of the older आई hardware. को To aid the quality and क्या dynamic बनाया nature भाई. of the gameplay, the engine uses a mixture of shadow maps and then screen space shadows. अरे नहीं and इनका screen खुद का space इंजन ambient होगा occlusion. बराबर. You can see the PS4 है ना. telltale artifacts of these when occluded and disoccluded अच्छा by अभी देखो foreground objects. पूरा They present the same as reflections do in the title, which also use a mixed हाँ. probe solution in projected cube maps with screen space. हाँ रे reflections. ट्रेसिंग मतलब इतनी भी नहीं होगी भाई. PS4 है उसमें क्या ही एक्सपेक्ट करोगे ज़्यादा. ये इतना चल रहा है वो भी बहुत है ब्रो. This provides longer and Motion more blur भी accurate दिख रहा है. reflections on PS5, as you can see the shorter cut-off in the reflections. Shadows or AO can still fade out and in on smaller incidental details हाँ. on the screen,
ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भाई, ये चल जाए उतना ही बहुत है हमारे लिए। You can definitely see some light bleed and incorrect specular at times, even on PS5, which still uses the same core assets and lighting model. But like many things in the game, they are refined and enhanced on the newer machine. The single biggest boost the PlayStation 5 offers is the resolution, as all other areas are improved by it, including the game's resolution temporal anti-aliasing, PS4 Pro भी सही है पर even वर्क नहीं 1080p करता अभी वो and sharp with very little अभी तो aliasing present. क्योंकि The PS5 in both modes 1.5 साल बाद तो offers a PS4 के crisp गेम्स आने image बंद हो that can जाएंगे even be और फिर वो noticed तुम over time. 28-30 हज़ार डालोगे उसमें। इससे अच्छा तो PS4 PS5 डिजिटल एडिशन ले लो भाई, मैं तो बोलता हूँ। Plus the AA and sharpening pass may also be slightly tweaked here. रुको थोड़ा 1 साल और ले लो, कोई बात नहीं। Between the resolution and performance mode on PS5 is 1 साल 6 महीने सेविंग्स करो और ले लो भाई, घर के पैसों से मत लो कुत्तो। Shadow filtering for contact hardening is now added. In addition, the level of detail is improved with less imposters used off into the distance, higher geometry चलो इतना तो पता चल गया भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय पीस आउट। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हो सके तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय पीस आउट। देख रहे हो भाई क्रेटोस, इसमें देखो मेरे को ना गॉड ऑफ वॉर 2018 में इतना नहीं लगा था उस क्रेटोस का मॉडल, क्योंकि अभी देखो जो उसको ऑरेकल ने जो श्राप दिया था कि तुम्हारे फैमिली के जो एशेस है वो तुम पे ऐसे मतलब तुम्हें चिपक जाएंगे, पूरी बॉडी तुम्हारी वाइट हो जाएंगी, मतलब ये पूरे उसके एशेस है ना, मतलब जो राख थी या फिर जो भी बोलते हैं उसको अस्थिया, वो उसके शरीर पर चिपक जाती है उसका, इसलिए उसका शरीर जो है वो वाइट हो जाता है। और इस रैग्नारॉक में तो मतलब दिख रहा है भाई, मेरे को 2018 में इतना नोटिस नहीं हुआ पर इसमें हो रहा है कि इसके शरीर पर एशेस चिपक गए हैं। ओके सो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय पीस आउट।